307 and 34. 307, 34 for 7 days. May I permit you to read the FIR? शिवा में निवेदन है कि मेरा नाम राधिका है। कस्टडी रिपोर्ट क्या है? कस्टडी तो कन्फर्म हुआ था कस्टडी 2 महीना। इनका है 2 months है कस्टडी अपीला नंबर 1 का। अपीला नंबर 2 महीने में कुल 25 government employee thereafter he is suspended and dismissed after 7 years. लाल बिहारी का 25 दिन आपका कस्टडी 25 days। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो और ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। देखेंगे आगे कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस एंड काउंटर केस कहीं सब तीनों का 25 दिन है। तीनों का कस्टडी $25 days। आईपीसी दीजिए। ये पुराना वाला एक्ट है क्या? कल बोले थे ना पुराना एक्ट चाहिए इसलिए हो। पहले आप अपना पॉइंट बताइए, आप किस पॉइंट पे बहस करना चाहते हैं, फिर आपके सारे रिकॉर्ड देखेंगे। एक तो एज हो गया आपका, कोई मिनिमम सेंटेंस भी नहीं है 307 में, है ना? और बताइए कोई एंटीसीडेंट है? कोई ये है क्या? एक मिनट एफआईआर यदि हम पढ़ते हैं तो क्लियर कर जाएगा। पढ़िए। हाँ पढ़िए एफआईआर पढ़ के आपको खुशी है तो उसी को पढ़िए। हाँ थोड़ा सा। राधिका राम पिता स्वर्गीय भिखारी राम 1600 आज दिनांक 10/5/2003 बुधवार को प्रातः 6 बजे लाल बिहारी राम सुशील मोची कुंती देवी सभी ग्राम थाना ऋषिगंज जिला पलामू हमारे घर पर और मेरे साथ एकजुट होकर लाठी डंडा लात मुक्का से मारना प्रारंभ कर मेरे द्वारा बचाव का हल्ला करने पर अगल बगल के लोग एवं मेरी शांति देवी दौड़ कर आई और मुझे लाल बिहारी राम की लाठी से नंबर 1 मेरे सर पर चोट लगी एवं सुशील मोची अपने हाथ में लिए डंडा से मेरे दाहिने आंख पर मारा जिससे सब जख्मी हो गया एवं आंख फूल गया
झगड़ा का कारण है कि 2 दिन पहले लाल बिहारी का छोटा बेटा, आगे है 7-8 साल का था, मेरे पेट में आम तोड़ रहा था, जिस पर मेरी पत्नी शांति देवी लड़का को डांट फटकार किया, जिसके कारण उपरोक्त लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किया। अतः श्रीमान से इसमें जो है पत्नी कुंती देवी पर जरा सा कोई एलिगेशन नहीं है, विस्पर नहीं है इन एफआईआर। सब लोग साथ में आए, सफाई लाठी डंडा लेकर 34 लगा हुआ है ना। हाँ 34। बट कहने का था कि ये तो पारिवारिक बच्चा आम तोड़ा था, कुंती देवी जो है एक शब्द नहीं बोली थी। एप्लीकेट नंबर 2 जो है आंख के नीचे अकॉर्डिंग टू एफआईआर मारा था, जिसका कोई इंजरी नहीं है, नॉट इवन ए सिंपल इंजरी भी नहीं है। किसका? और एप्लीकेट नंबर 2 का वो आगे मेडिकल में देख लेंगे। अपीला नंबर 2। हाँ सुशील मोदी। नहीं, आप इसमें बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है। 34 लगा हुआ है तो स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 34 लगा हुआ है मोटिव इंटेंशन देखने का, लेकिन मोटिव भी ऐसा 307 का नहीं था। बच्चा आम तोड़ रहा था, उसको लेके जो है ये लोग कोई बच्चा आम तोड़ा, बच्चा को डांट दीजिए तो उसके बाद देखिए माँ बाप लोग आजकल तो मर्डर कर देंगे आप। इंटेंशन कहीं कुछ ऐसा नहीं। इसके बाद नो इंटेंशन, पूरा इंटेंशन, नो इंटेंशन का सब। हाँ पूरा इंटेंशन, लेकिन नो इंटेंशन टू मर्डर ऐसा कुछ आगे इंजुरी क्या है? इंजुरी वही ब्रेन में आया है, जो कि ग्रेवियस राम बिहारी लाल जो है लाल बिहारी राम के द्वारा जो है ब्रेन पर जो है वही इंजुरी है। लाल बिहारी राम ने मारा ऐसा कहाँ पर है? फिर तो एफआईआर पहला सब यही है। मेरे साथ एकजुट होकर लाठी डंडा लाल मुका से मारना प्रारंभ कर, मेरे द्वारा बचाव को इतना है। लाल बिहारी राम सभी प्रणाम इतना प्रणाम घर पर आए, एकजुट होकर लाठी डंडा मुक्का से मारा प्रारंभ कर दिया। मेरे द्वारा बचाव करना अगर पकड़ के लोग एवं बेटा ने आंख से मारा, हाँ बाप ने माथा में मारा, लाठी से मेरे सर पर चोट लगी, यही है जिससे एक आंख में जख्म। हाँ तो no otherwise no specific overt act so far as the lady is concerned. हाँ एक सेकेंड। Appellant number 1 hit on head. Appellant number 2 hit on eyes. Appellant number 3 bleeding and no overdose. इंजुरी रिपोर्ट कौन है डॉक्टर? जो इनिशियली डॉक्टर चेक किया था, he has not been examined. Doctor has not been examined. IO has not been examined. Later on जो क्लिनिक से आया है इंजुरी रिपोर्ट, वो है फर्स्ट जो सदर हॉस्पिटल में डाल्टनगंज में दिखाया गया, वो रिपोर्ट में But he was referred to LIMS, no? But admittedly referred to LIMS. इसके बाद जो है ना, after 4 days he has gone to LIMS for further treatment. After 4 days of incident. हाँ मैम। The doctor from LIMS has been examined.
Examined as PW. PW 11 है, 10 and 11. पढ़ी. About 11 witness has been examined by the court below. PW1 रीता देवी. अरे इंटरव्यू ऑर्डर से मत पढ़िए. डॉक्टर का गवाही पढ़िए. On 12/5 ये witness number 10. On 12/5/2000 I was posted at residential medical officer department of neurosurgery RMCH Ranchi. On that day 12/5 है. घटना है 10/5. I was posted as a residential medical officer department of neurosurgery RIMS Ranchi on that day at 5:45 AM. 1 राधिका 12 तारीख को एडमिशन है. ठीक है. 12 ये 4 दिन का कहानी कैसे बना. डेट ऑफ इंसिडेंट बताइए. डेट ऑफ इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू द FIR 10/5/2000 10/5/2000. Examined at RIMS. RIMS में एग्जामिनेशन 12/5/2000. तो आप 4 दिन तो गलत है ना. हाँ 4 दिन गलत है. अपने मेडिकल एविडेंस में ही बोले हैं कि टाइम ऑफ इंजरी वाज 48 आवर्स. मैचिंग हो गया. हाँ तो टाइम ऑफ इंसिडेंट डेट ऑफ इंसिडेंट के साथ तो मैचिंग हो गया ना. मैं 48 hours, right? राधिका नाम संगीत सतराम he incident district Palam was admitted by registration number such and such date number such and such amendment 8 injury. फ्रैक्चर है इनका आँख और उसमें दोनों में इंजरी है. He was referred from Sadar Hospital Dalton by registration number such and such 10/5/2000. I found the following injuries. Stitch wound, one wrong on right parietal lesion. CT scan was also taken at RMCH on same day. Extra dural blood collection on wrist, right, frontal side, parietal, uterus of vein and fracture and use right. On the patient was operated upon under general and right side on present decompensational group and blood clot was removed. Identification removed on right atrium also level 4. Time nice injury 48 hours at the time of admission. Nature of weapon hard gun weapon nice taken on injury grievous. This injury to head and brain in life. That means the patient was discharged on 18 such 2 thoughts.
प्रीवियस है ब्रेन वाला, लाल बिहारी राम। 2 जगह फ्रैक्चर है। हाँ ब्रेन, हाँ। ब्रेन में जो मारे हो 2 जगह फ्रैक्चर है और वो प्रीवियस लाल बिहारी। क्या बोल रहे हैं बताइए, अब क्या बोल रहे हैं? The victim has been examined. Victim का examination हुआ है. He has supported the case. He has supported the case and his daughter and wife have supported the case. They are the eyewitness. There is no eyewitness. यदि आप पढ़ेंगे तो किसी ने देखा नहीं। चोट लगी है कि वो भी नहीं लगी। हाँ, चोट लगी है ना? Circumstantial evidence. Circumstantial evidence नहीं है, please don't say. क्या circumstantial? Yes, injury everything. Eyewitness क्योंकि स्पॉट पे कोई लेटर हो, सारा फैमिली जो है वो सारा डिपोजिशन में है कि हल्ला सुनकर आए तो देखे कि गिरा हुआ है, ब्लीडिंग है, उठाए। Wife has been examined as. Minor. Wife examined as. Minor. WP1. PW1. PW. और daughter. अब PW11 तो वहाँ का एसोसिएट पोस्टेड एज मेडिकल ऑफिसर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेस्लीगंज, ये तो है ही PW11। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट की है आप पढ़ेंगे जजमेंट में आया, जजमेंट से नहीं पढ़ते ना। PW1 रीता देवी has been examined, wife, और इसके बाद PW4 brother of the victim, PW5 second wife शांति देवी। PW4 is brother. हाँ, brother of the informant. And PW5? 5 is the one of the wife, second wife. PW1 wife. Daughter कौन है? Daughter. PW7 daughter of the informant. PW8 daughter of the informant. PW9 self-informant. 10 and 11 daughter. और PW6 कौन है? Only Devi daughter of the informant. PW6. 6. तो 3 बेटी का एग्जामिनेशन। हाँ, 3 बेटी 2 पत्नी और 1 भाई। इसके बाद कुछ विलेजर्स भी हुए जो कि बेटा हॉस्टाइल दी है। PW2 Madhevram villagers declared hostile. PW3 villagers have also declared hostile. PW2, PW3 villagers. You want to say that there is no eyewitness? मान Victim तो है ना eyewitness? victim तो है ही और उनका स्टेटमेंट भी है। बाकी बेटी पत्नी शवों का स्टेटमेंट है, लेकिन शवी जब आए हल्ला सुन के तो देखे कि गिरा। पत्नी का सुनाइए, पत्नी का पढ़िए चलो PW1। आज से 2 साल पहले सुबह में 6-7 बजे मैं अपने घर लेस्लीगंज में थी। सुशी
और कुंती हमारे घर आए। लाल बिहारी सुशी और कुंती हमारे घर आए। लाल बिहारी और सुशी हमारे पति राधिका राम को लाठी से मारने लगा। कुंती ललकार जी की जान से मार। हमारे पति को माथा और आंख पर चोट। परंतु यह घटना आम कुमार के बेटे के द्वारा चोरी करने और उस पर हमारे पति के द्वारा डांटने के कारण हम तीनों उनके पहचानते हैं। आइडेंटिटी हमारे पति को दो पत्नी है, दोनों जीवित हैं। घटना के पहले से हम और मेरी शौकत घर में थे, काम कर रहे थे। घर से 15-20 डेग पर कूदक कर वहाँ पर पति को मारा। लाठी के मार की आवाज सुनकर हम लोग बाहर निकले। जब निकली तो पति का कपार फटा हुआ देखा। काफी खून गिरा हुआ था। वह गिरे हुए थे। कुएं का जगह पत्थर का बना हुआ। जिस स्थान पर हम कुआं पर पहुंचे वहां पति अलावा गांव का कोई नहीं था। गांव के लोग जुटे तो मुद्दाले भागने। भागते हुए तो देखा है। इसके अनुसार मारते हुए मुझे पति से मां के संबंध में बात हुई थी। वह बताए कि जब मन वोट दे रहे थे तो लाल बिहारी अचानक आया और हमारे पति इजलास में बैठे हुए। मैं भी थाना गई थी। वहाँ पर पति को पानी पिलाई तो होश में आए और तब थाना ले गए। थाना में हमारे की घटना को बताया। हमने माँ की घटना को बताया। दरोगा जी लिख लिए तो हमारे से सही किया। उसके बाद पति को अस्पताल ले गए। हमारे घर के अगल बगल मियाँ और ऊपर के घर है। घर के पीछे ठाकुर लोगों का भी घर है, थोड़ी दूर पर है। घटना के विषय में हमने अन्य लोगों ने गांव के लोगों को बताया। पति के होश थे, इस कारण कुछ नहीं बोली। अस्पताल में कितना खर्च हुआ मेरा सकन जानती है। शौकन ने हमारे सामने पैसा नहीं दिया था। लाल बिहारी के देवी हम लोगों के खिलाफ केस किया है, काउंटर केस इसका काउंटर केस है। जजमेंट केस काउंटर केस किसको बोलते हैं? एक इंसिडेंट का केस काउंटर केस होता है। हाँ, नहीं इससे पहले केस हाँ, तो था। केस था वो अपनी जगह। हाँ, लेकिन एक इंसिडेंट का केस काउंटर केस होता हाँ, है। दो अलग अलग इंसिडेंट का केस काउंटर केस नहीं होता। नहीं, वो सेम इंसिडेंट का जब दोनों पार्टी केस किया तो केस काउंटर केस पहले से विवाद चल रहा था। बात हाँ। विवाद नहीं था तो मारने के लिए क्यों? कोई पड़ोसी को थोड़ी ऐसे मारता है। खिलाफ केस चल रहा था, उसका जजमेंट की कॉपी लगाया। ठीक, बहुत अच्छी बात। और उसका हाथ ऐसे द्वारा नहीं जानती कि उसका हाथ टूटा कि नहीं। गलत है। पति के सिखाने पर गलत गवाही दे रही हूँ। चलिए भाई, आपका इन्फॉर्मेंट का बयान पढ़िए। इन्फॉर्मेंट इज PW 9। पढ़िए पढ़िए। आज से करीब 2 साल पहले 7 बजे सुबह में जब मैं अपने घर इसलिए गई था तो लाल बहादुर खुशी पहुंची
कुंती देवी आए, सुशील मोची ने मुझे डंडा आंख के पास मारा, शुभ। लाल बहादुर ने डंडा माथा पर मारा, माथा फट। और कुंती ललकार थापा नुका से भी उपरोक्त दोनों ने मुझ पर मारा। माथा में चोट लगा तो आरएमसीएच में हड्डी निकल गई। घटना के 2-4 दिन पहले कुंती देवी का लड़का हमारे आम तोड़ा था और हमारी पत्नी शांति देवी ने से डांट दिया था, जिस कारण यह घटना घटी। हमने थाना पर केस किया। संजय कुमार ने हमारे बयान को लिखा और हमने पढ़कर समझा, दस्तखत किया। यही लिखित रिपोर्ट है अंकित के अभियान के पहली चोट मुझे सिर पर लगी। मारने वाला उसी समय हमारे पीछे था। काफी चोट लगी। मैं गिरा नहीं, बैठा ही रहा। वहाँ दरवाजा के बीच में बैठा था। वहाँ का जो प्लास्टर से बना है वहाँ पर नहीं था। जहाँ पर मार लगी उसकी चौहदी निम्न प्रकार। उत्तर रामवृक्ष की जमीन, दक्षिण राम वृक्ष और राम सचिव। अब ये सभी ओडिशा का कट्ठा के है। मार होने के बाद हमने हल्ला किया। आश्रम भगत के लोग बाद में आए। सबसे पहले मेरी पत्नी आई। हमने किसी को घटना की बात नहीं कहा। गांव के बहुत लोग, लाला साहब, कृष्णराम, भारत देव राम आदि आए। हमारा गांव लगभग 5 की बस्ती है। पूरा हमारे घर के पास 5 घर है। गांव 250 घरों की बस्ती है, जिसमें विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। लाल बिहारी ने हमारे खिलाफ मुकदमा, लाल बिहारी ने हमारे खिलाफ मुकदमा किया है, जिसमें हमारे लोग भी। अब इम्प्यूट ऑर्डर पढ़िए। All the accused persons named above stand charges under section 307-34 IPC for assaulting. नहीं फाइंडिंग पढ़िए, वो तो हम देखें। Fine. Prosecution has examined altogether 11 witnesses, including of 2 doctors and informant PW9 informant Radhika Ram has stated that while he was at his house at 6 a.m., accused Lal Bihari Ram, wrongly written as Lal Bahadur, due to sleep. But under para 9 of this cross-examination, Lal Bihari Ram has been Sushil Moti and Kunti Devi can accused Sushil Moti even his danta below near his eye, and accused Lal Bihari Ram gave danta blow on his head, while accused Kunti Devi evaded the offence. He has continued to await that accused Sushil Moti and Lal Bihari Ram also assaulted him with fists and slaps, as he had sustained injury in his leg. He has treated in RMCH, where bone was extracted from his head.
The occurrence is said to have taken place due to a scolding of his wife DT.24.03.2026 Shanti Devi to the son of accused Kunti Devi for working of mango 2 to 4 days before the occurrence. He has continued to say that he submitted written report Exhibit 1 for lodging of the FIR Exhibit 3. During cross-examination under Para 6, he had said that assault took place between the well and his darwaza, and well stands in his well. He has given the boundary of the place of occurrence, but it appears that he has given the boundary of the entire well. Under Para 7, he had said that on the place of occurrence, of all his wife 10, PW5, his wife says so under Para 6 offer evidence. Under Para 10, he has given details of the assault to him that fist lathi blow was given to him while he was sitting and shaken when he was standing. देखिए आपका मेडिकल एविडेंस, आपका जो और एविडेंस है, पर्टिकुलरली एविडेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट मैचिंग है सब। टाइम, डेट, प्लेस सब मैचिंग। टाइम, डेट, प्लेस, मैनर ऑफ ऑकरेंस सब मैचिंग। ये तो है कि ग्रेवियस इंजरी बताया जा रहा है माथे का, फ्रैक्चर है। हाँ फ्रैक्चर, और वो जो है लाल बिहारी एक्यूज नंबर 1 लाल बिहारी राव के द्वारा मारा। आँख में भी 2 जगह फ्रैक्चर है। आँख में भी उधर सर पे राइट हैंड साइड में। अब आँख के ऊपर मारेगा तो इधर ही लगेगा ना। ग्रेवियस जो है इंजरी जो दिया है, अच्छा, अलग अलग देखें सब, हेड का अलग अलग देखें सबका। 34 नहीं देखें, आँख का 34 नहीं देखें। 34 तो है ही, 34 तो क्या फर्क लगा हुआ है। और कुंती देवी, तो कुंती देवी पर एलिगेशन नहीं, वो हल्ला मचा रही थी कि मारो। ये तो डिपोजिशन लेटर डिपोजिशन में जो है लेटर बनाया है, इन एफआईआर इनिशियली जो है विस्पर नहीं आया, बाद में जो है आफ्टर थॉट इंटेंशन ऑफ इम्प्लीकेशन उनकी देवी पर ये एलिगेशन आया कि लड़का। आपको क्या बोलना है? Yes, indeed, has time in which there's a abundance of motive. See, मोटिव होता तो आर्म्स लेके और जो है लोहे का और कुछ लेके जाता मारपीट करने के लिए, तो बचाने के लिए पता नहीं था कि लाठी से सर में मारेंगे तो अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो आदमी मर सकता है। मोटिव का क्या जरूरत है? मोटिव मींस कि जान मारने की नियत। जान मारने की नियत कहाँ रिक्वायरमेंट है 307 में? पढ़िए 307। जान मारने की नियत होना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि पता होना चाहिए कि इससे मारेंगे तो ये मर सकता है, ये है रिक्वायरमेंट। आप तो इतना दिन एपीपी रहे, आप कैसे सब बहस कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं हम ना, सही चीज है। सर में मारा है, सर फट गया है, तो इंटेंसिटी तो काफी रहा होगा। अभी इमोशनल है, लड़ाई हुई है और सर फटा है, ग्रेवियस है, एडमिटेड है। आपको क्या बोलना? कुंती देवी के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? She was there with them. FIR में उनको इंस्टिगेट करने का एलिगेशन नहीं लगा, FIR में नहीं। बाद में गवाही में आया है कि वो बोल रही थी, गवाही में भी कोई ओवर टाइम नहीं आया। तो क्या बोलना है कुंती देवी के बारे में? 34 तो है ही ना। एक्यूटल नहीं भी करेंगे तो सेंटेंसिंग पर क्या बोलना?
अगर एक्यूटल ना भी करें तो सेंटेंस पे क्या बोलना है? 2 महीना कितना दिन रही है? 25 दिन तो रही है जेल में, रही। कुछ बोलना है तो बोलिए कुंती देवी का। इंटेंशन था कि मरवा देंगे। झगड़ा मुझे कराने उनका तो आता ही कि मतलब काम होता है ना कि दो आदमी फाइट कर रहे हैं आपस में, वो कर रहे हैं मारो जान से मार दो। एफआईआर में क्या नहीं बोले कि कुंती देवी क्या कर रही थी? दोनों का तो नाम कहानी सुना है, एफआईआर में तो नहीं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगता है, बाद में किया है कुंती देवी के लिए। उनका पीरियड अंडरगॉन कर देते हैं, उम्र भी हो गई है। अपीला नंबर 1 के लिए क्या बोलना है? एज और इनका मेडिकल कंडीशन, डायरेक्ट एलिगेशन तो इन पर है ही। क्या बोलना है इनका? एज और मेडिकल कंडीशन को देखकर आप ऐसे अंधे आदमी को रख पाइएगा जेल में? ही इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। आपका एफिडेविट भी आ गया, काउंटर एफिडेविट। एकदम ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड है, उनको जेल में कौन देखेगा? आप लोग के लिए परेशानी हो जाएगा इनको रखना, देखभाल करना। कुछ दिन तो कस्टडी में रहे ही हैं, उनको छोड़ देते। अब रहा बेटा, बेटा को क्या करना? एक मार्क फैमिली का अर्निंग, ये सब कहानी प्लीज, ये सब कहानी केवल हम अपना सबमिशन। नहीं, आपका सबमिशन बिल्कुल सही है। तो एक आदमी को 307 का केस हुआ, सब 20 दिन में छूट गया। यही मैसेज है सोसाइटी को। बेटा को तो नहीं छोड़ पाएंगे। नौकरी चला जाएगा। आप एक्यूटल खोज रहे हैं यहाँ पर? नौकरी तो तब ना बचेगा जब एक्यूटल हो जाएगा। बिना एक्यूटल हुए नौकरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पीरियड अंडरगॉन में भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बेटा का तो कुछ केस नहीं बना। हालांकि बेटा का जो आंख के नीचे जो है सिंपल 34 है, इंटेंशन जो है 34 इसी के लिए लगाया जाता है, लेकिन एक ही द्वारा को मारा गया है। अलग अलग इंजरी नहीं देखेंगे ना, अलग अलग इंजरी नहीं देखेंगे। वाइफ का देखेंगे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेडी सोचकर, एज सोचकर पीरियड अंडरगॉन, ऐसा थोड़ी है उनका एक्यूटल कर देंगे। एक्यूटल नहीं हो सकता। आप देखिए, आपका 66% आपका सक्सेस हो, अब 33% नहीं हुआ। 3 एक्यूज्ड है, 2 को तो आप रिलीफ दिला दिए, काफी है 307 का केस। बताइए। For the learned counsels appearing on behalf of the parties, this appeal has been filed against the judgment dated 4 May 2005, an order of conviction and sentence dated 5/5/2005, passed by learned Sessions Judge Palamun Daltonganj in Sessions Trial number 54 of 2000. Hereby the appellants have been held guilty for offence under section 307/34 of Indian Penal Code, and they have been sentenced to undergo rigorous imprisonment for 7 years for the same offence. At the outset, the learned counsel for the appellants has submitted that appellant number 1 is 68 years of age as of now, and even as per the counter affidavit filed by the state with regard to the present status of health of appellant number 1,
the appellant number 1 has been found to be in poor health condition and is blind. Blind है ना पूरी तरह से. So far as appellant number 2 is concerned, he is the son of appellant. Appellant number 1 का बेटा तो नहीं है? बेटा नहीं. He is 44 years of age as on today. The appellant number 3 is a lady and wife of appellant number 1, who as on date is 66 years of age. The learned counsel submits that the records further reveal, the custody report as received from the concerned court revealed that all the appellants have remained in custody for 25 days. He submits that the FIR was registered under section 341, 323, 325, 447, read with section 34 of IPC for the alleged incident on 10/5/2000. He has placed the FIR and has submitted that specific allegation with respect to head injury has been made against appellant number 1, and with respect to appellant number 2, there is an allegation that he hit the informant victim near his eyes. He submits that there is no specific overt act so far as appellant number 3 is concerned in the FIR. He further submits that initially the victim was taken to Sadar Hospital, Daltonganj, and thereafter he was taken to RIMS Ranchi for further treatment. And the doctor of RIMS has been examined as PW10, and the doctor at hospital in Daltonganj has been examined as PW11. He submits that although PW 1, 4, 5, 7 and 8 are the family members of the informant / victim, who are wife, brother, second wife, daughter and daughter respectively. PW6 भी है daughter. But none of them are eyewitness to the occurrence, and they arrived at the place of occurrence after the incident. He submits that so far as villagers are concerned, they have been examined as PW2 and 3, and they have turned hostile. The learned counsel submits that the informant has been examined as PW9, and he has alleged that the appellant number 3, the wife of appellant number 1, was present and was instigating the commission of offence. The learned counsel submits that there was no intention to kill, and therefore offence under section 307 is not made out. He has further submitted that the IO of the case has not been examined, and therefore the place of occurrence has not been fully proved.
And at the end, he has further submitted that even if has further and without prejudice to the aforesaid submissions, has submitted that even if the conviction is sustained, some liberal view be taken against all the appellants, including appellant number 1 and 3. On the point of sentence, and has submitted that as per the impugned order and sentence, they have no criminal antecedent. Yeah. The learned counsel has further submitted that the incident had taken place on account of some dispute, on account of some alleged dispute due to on account of alleged dispute by which the son of the accused number 1 and 3 was scolded by the informant party due to stealing of mangoes. Right? Okay. The learned counsel for the state has opposed the prayer and has submitted that the basic ingredients for offence under section 307 IPC has been clearly made out. He submits that the injury suffered is grievous in nature and therefore the assailants clearly knew the gravity of the act which was likely to cause death, but fortunately the victim informant did not succumb to the injuries. He submits that the victim was also referred, considering the nature of injuries, the victim was referred for further treatment by RMCH Ranchi, and it was found that he suffered fractures, दो जगह fracture है. He fractured on his head. The learned counsel submits that the victim has supported the prosecution case and his evidence has remained intact, and therefore it is immaterial as to whether the other witnesses are eyewitnesses to the occurrence or not. He has also submitted that the medical evidence is corroborating the incident which has been narrated by the victim in the FIR. कितना साल हो गया? 2000, 25 साल. पांचवा महीने का 10/5/2000 7 महीना तो घर भी आ गया. 2000 का भी 7 मंथ हो गया. 25/7/10
क्या करना है 25-26 साल बाद? नहीं, हेवी फाइन लगा देते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड 25-26 साल बाद क्या सिक्योरिटी मिलेगी? आप वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्फॉर्मेंट को विक्टिम कॉम्पनसेशन में दे देते हैं, फाइन लगाते हैं। उसमें तो है फाइन का प्रोविजन, और लिख देंगे अगर फाइन दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो अपना सेंटेंस सर्व करेंगे। दे देंगे दे देंगे जैसे During the course of hearing, it transpired that the incident is of 10/5/2000 at 6 a.m. and more than 25 years have expired from the date of the incident. After hearing the learned counsel for the parties, this court finds that as per the prosecution case on 10/5/2000, the three accused persons who are the appellants before this court came to the house of the informant and assaulted and it is specifically mentioned that appellant number 1 assaulted the informant with lathi on his head, and appellant number 2 also assaulted him with lathi towards his eyes, and he suffered bleeding injury on the head and swelling near the eyes. The reason for the incident has also been mentioned in the FIR itself, that his wife Shanti Devi had earlier scolded the son of the appellant number 1 and appellant number 3 in connection with plucking mangoes from their tree, and this incident had happened just 2 days prior to the present incident. In the FIR, though it has been mentioned that the appellant number 3 had also accompanied the 2 appellants, but no overt act as such has been mentioned in connection with appellant number 3. The FIR was registered and the appellants were charged for offence under section 307/34 of were charged for offence under section 307/34 of IPC. The prosecution examined altogether 11 witnesses, including the informant PW9 and the 2 doctors
one of RIMS Ranchi as PW10 and one from the Southern Hospital Daltonganj as PW11. It is apparent, it is PW9 is the informant of the case. So far as the injury suffered by the victim is concerned, the PW11 has deposed with respect to the injuries and described the injuries as follows, and has also exhibited the injury report as Exhibit 2/1. PW11 is the medical officer at Primary Health Center, Leslieganj, who had examined the victim on 10/5/2000 at 9:50 a.m. and found the aforesaid injuries. And as per the injury report, the injuries were possibly by lathi blows, and the injury number 1 and 5 were found to be grievous. This witness has also stated that the injured were referred to Daltonganj Hospital by this doctor. This witness has been cross-examined and during cross-examination he has stated that the injury could have occurred even by fall. So far as PW10 is concerned, he is the doctor who had examined the victim informant on 12/5/2000 at who is a medical officer of Department of Neurosurgery at RIMS Ranchi. He has stated that he had examined the victim and the victim was referred from Sadar Hospital, Daltonganj. By registration number 1214 dated 10/5/2000, and he found the following injuries on the body of the victim. He has also stated that the patient was operated upon by him on 13/5/2000 and blood clot was found. Blood clot was also found. He had also put the mark of identification with respect to the victim and stated that the time of injury was 48 hours at the time of admission of the victim. He has further deposed that the
victim was by hard and blunt substance like lathi, and the injury was grievous, and this type of injury was to the head and brain was life threatening, and the patient was discharged on 29/5/2000. The injury report has been prepared by this doctor who has exhibited the injury report as Exhibit 2. The doctor has been duly cross-examined and during cross-examination he has stated that the opinion regarding fracture of parietal bone was given on the basis of the report of CT scan. However, the report of the CT scan was not sent with the injury report. This court finds that so far as the evidence of doctor is concerned, they have given clear evidence with respect to the nature of injury suffered by the victim, and both the doctors have opined that the victim had suffered grievous injury by hard and blunt substance, and the PW10 has clearly stated that the victim had suffered fracture on the head, and further the nature of injury was grievous, which was life-threatening. The victim was operated on 13/5/2000 and he remained hospitalized since till 29/5/2000. Apparently, the nature of injury suffered by the victim informant, as disclosed in the FIR, is matching with the evidence of the doctor with respect to the period of injury and the weapon by which the injury was caused. Both the doctors have deposed that the nature of weapon used was hard and blunt substance like lathi. So far as the evidence of PW9, the victim, is concerned, he has fully supported the prosecution case and has made specific allegation with respect to the assault given to him by the appellant number 1 and 2. But so far as appellant number 3 is concerned, this witness has stated that she was instigating the other two appellants for the commission of offence. This witness has also exhibited the mark of injury in paragraph 2, has also shown the mark of injury to the court in paragraph 2 of his evidence, and has also supported the case by giving the cause of the incident, that Shanti Devi, his wife, that
that Appeal number 3, Kunti Devi had scolded the son on plucking of mangoes. This witness has been cross-examined, and during cross-examination he has vividly described the place of occurrence and has also stated that the people around and his wife had also come to the place of occurrence immediately after the incident. He has also stated that after perusal of the evidence of the informant, this court finds that the informant has fully supported the prosecution case, and there is no material contradiction in his evidence during his cross-examination, and he has also described the place of occurrence. So far as the other witnesses, that is PW1 within bracket wife, PW4 within bracket brother, PW5 within bracket second wife, PW7 within bracket, PW6 within bracket daughter, PW7 within bracket daughter, PW8 within bracket daughter are concerned, they have also supported the prosecution case, and the witnesses had come to the place of occurrence after the incident, but they have duly described the place of occurrence. This court is of the view that though the fact remains that the investigating officer of the case has not been examined, however, the place of occurrence has been duly proved by the other witnesses, including the informant of the case, and the evidence of the informant of the case is corroborated with the medical evidence, which was said to be dangerous, said to be life-threatening by the doctor who had performed the surgery upon the body of the informant. In view of the aforesaid discussions with respect to the evidences placed on record, this court is of the view that basic ingredients for offence under section 307/34 is made out against all the accused persons, as all the accused persons have
joined together to assault the informant, which caused which caused life-threatening injuries and was grievous in nature, merely because no overt act by using any weapon has been assigned to the Appeal number 3. The same is not a ground for her acquittal in view of the fact that section 34 of the IPC is also involved in the present case, and she is alleged to have been instigating for the commission of the alleged offence. Consequently, and this court has gone through the judgment passed by the learned trial court and finds that the judgment has considered all the evidences placed on record, and upon discussion of all the evidences, the learned court has come to a clear finding that the offence is made out. The learned court has also recorded that when there is sufficient evidence, the motive is not required to be proved and was immaterial. The court also recorded that there was no contradiction on the point of place of occurrence, and the place of occurrence stood intact, identified and established. The court also recorded that the incident was reported to the police within 2.5 hours on the same day, which was apparent from the formal FIR Exhibit 3. And this left no doubt in the prosecution story. And that the doctor who had treated the informant, and there was sufficient evidence with respect to the injuries caused to the informant, which were life-threatening by the accused persons. This court finds that the judgment passed by the learned trial court is well reasoned and has independently scrutinized the materials on record as discussed above, and finds that the appellants have been rightly convicted for offence under section 307/34 of the Indian Penal Code. However, on the point of sentence, this court finds that admittedly no previous criminal case has been mentioned in the impugned judgment against the petitioner, against the appellants. The fact also remains that more than 25 years has elapsed from the date of the incident. The appellant number 1, who caused the head injury, is blind as per the report and the counter affidavit filed by the state, and is of 68 years. So far as appellant number 3 is concerned, she is his wife and a lady
who is now 66 years of age. In view of the aforesaid circumstances, the sentence of appellant number 1 and 3 is modified in the following manner. So far as appellant number 3 is concerned, her sentence is confined to the period already undergone in custody. So far as appellant number 1 is concerned, he is one of the main assailants of the case. However, considering his medical condition, his sentence is modified to the period already undergone in custody with a fine of rupees 10,000 to be deposited within a period of 3 months from the date of communication of this judgment. In case the fine amount is not deposited, the appellant number 1 would serve the remaining sentence. Sentence imposed by the learned court. So far as appellant number 2 is concerned, he is also the main assailant who had assaulted the victim by lathi, causing grievous injuries, and at present he is 44 years of age. However, considering the fact that more than 25 years have elapsed from the date of the incident, his sentence is also modified in the following manner. The sentence is reduced to the period undergone in custody with fine of rupees 50,000 to be deposited within 3 months. If the fine amount is not deposited within 3 months, the sentence as imposed by the learned court, the appellant number 2 will undergo the sentence as imposed by the learned court. It is further directed that the fine amount so deposited by appellant number 1 and 2 be handed over to the informant of the case, who is also the victim, by the learned court after due identification by way of victim compensation. नहीं कहाँ से बढ़ाएगा? नौकरी करता है नहीं नौकरी कर नहीं रहा, बहुत वही एक तो है घर चला रहा। बहुत तो एक ही होना चाहिए ना। 50,000 बोले, 50,000, 15,000 नहीं बोले, 50,000। 50 बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो आराम से 7 साल जेल में रहिए, खाना पीना सब मिलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है जेल में। आजकल जेल बहुत इम्प्रूव हो गया। 25 कर दिया। नहीं, इतना बार्गेन नहीं होता है। जो कर सकते थे हम कर देंगे। Disappeal is accordingly dismissed. 3 महीना from the date of communication of this judgment, और अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, रिवीजन होता तो खाली पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे कंफाइन कर देते, लेकिन अपील में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ, 50 तो थोड़ा कंसीडर। Item 2, General Appeal 670 Office on file. हम खड़े बड़े सीनियर एडवोकेट होते हैं। चलिए, yes, appellant.
है ये। Conviction under section 325 of the IPC, 34 of them. There are two offense laws. how many convicts? Two. And both of them are applicants. Yes. One is Avinash Rai. At the time, age of the Avinash Rai is 35 years. That is reflected in the judgment laws. ये वहाँ उसमें रख, उसमें फाइल ध्यान से इसको चेक भी करिए। कब का इंसिडेंट? 2000 20/9/2000 डेट ऑफ बर्थ 20/9/2000 7 बजे 7 at 7 p.m. Okay. Date of judgment is 22/9/2003 सॉरी 30/5/2005 30/5/2005। इस समय इनका एज क्या है? 35 years। हाँ अविनाश राय का 35 था उसमें और गणेश सिंह तो आज हो गया 55 years। yes अपीला नंबर 1, अपना नंबर अपीला नंबर 2, 2 गणेश सिंह is at that time 40 years और अभी तो 60 हो जाएंगे अपीला नंबर 2। ठीक है, और बताइए चार्ज आपका फ्रेम हुआ था 304 307 and 34 होता है and 34। और एफआईआर में जो हुआ था एफआईआर पढ़ी? एफआईआर हुआ था जो 341 323 324 307 341 आगे 323 323 324 324 307 307 and 34 of the IPC. and 34 of IPC। चार्ज और चार्जशीट आया है जो सेम अंडर सेक्शन में नहीं, चार्ज हुआ है अंडर सेक्शन 307/34। कन्विक्शन कन्विक्शन है जो 325 and 34 of the IPC 325/34 and 34 of the IPC दोनों आदमी IPC। रिवेस ऑफ RI for 2 years RI for 2 years। फाइन भी है? फाइन हाँ फाइन 500 रुपये फाइन 5। ठीक है, जी I will be permitted to first of all read the FIR also. आपका मेन पॉइंट बताइए क्या है? फिर एफआईआर। व्हाट इज योर मेन आर्गुमेंट? Altogether 9 witnesses have been examined by the prosecution. 9 I am relying altogether 6 witnesses. उसको बस पढ़ना है। कौन कौन सा विटनेस आपको पढ़ना? 1 PW1 1 PW2 PW3 3 PW5 5 PW7 7 PW9 6 4 क्यों छोड़ दिए? 4 छोड़ और कौन है? 4 जो है जो ये पत्नी है पति है PW6 की जो हॉस्टाइल है वाइफ ऑफ PW6 हॉस्टाइल। और PW6 कौन है? वही PW4 की पत्नी है PW6 PW4 की पत्नी है। जी PW6 is wife of PW4 और दोनों हॉस्टाइल हैं? नहीं एक हॉस्टाइल है हस्बैंड जो है स्टेटमेंट दिए PW6 hostile जी and PW4 has supported the case. हाँ ये सेम विटनेस
hearsay but supported. Yes, sir. ठीक है. और और PW8 को भी छोड़ दीजिए. कौन है ये? PW8 का क्या सुंदर है. कौन है? ये मतलब कि कोई रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन ये से विटनेस है, नोट कर लिया. यस, तो इसीलिए इनका जरूरत नहीं है. ठीक है. मेरे तरफ से 6 आदमी कोई फर्क नहीं करता. विक्टिम है. विक्टिम कौन है? PW9 इन्फॉर्मेट इंजर्ड पर्सन. इसका सपोर्ट किया है केस? PW9 सपोर्ट किया है ना? जी जी तभी तो काम. Any contradiction in the evidence? यस, जैसे PW9 जो है, जो बात कर रहे हैं, एलिगेशन जो दे रहे हैं, एलिगेशन जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो जो है PW1 जब एग्जामिन हुए तो वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है. PW1 आई विटनेस है? PW1 से PW1 आई विटनेस है? नहीं, ये हियर से विटनेस है. आई विटनेस कौन है? कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं. दरोगा से पूछा भी गया कोई आई विटनेस है तो बोले नहीं. आईयू कौन है? आईयू जो है PW7 है, अलग निरंजन चौधरी. तो आपका कहना है PW9 एंड PW1 का एविडेंस में कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ दो तीन चीज है उसमें, जैसे कि प्लेस ऑफ अकरेंस को दरोगा नहीं मार्क कर पाए, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन PW1 जो है प्लेस ऑफ अकरेंस को बता रहे हैं, PW9 भी प्लेस ऑफ अकरेंस को बता रहे हैं. इनका कहना है कि हम हल्ला सुने तब हम पीछे पीछे गए दौड़ते हुए, हल्ला के पीछे पीछे गए दौड़ते हुए. तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गया कि आप गए वहाँ पे तो और कितने लोग थे, क्योंकि चोट लगा था बंदा को, मारपीट का जो एलिगेशन है वो सब पूछा पूछी हुआ. तो उसमें फिर बताया कि नहीं, वहाँ पे हम किसी को भी नहीं देखे और वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं था जिसको हम पहचानते हैं. लेकिन सब के जो PW2, 3, 4 सब लोग एग्जामिन भी होने लगे उसी जगह, और वो लोग भी जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे गए हैं तभी जो है 3 आदमी बताते हैं कि हम जो है हॉस्पिटल लेके गए, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर सरैया हाट में, और एक आदमी बताते हैं कि हम थाना में लेके गए. कौन बोला? PW बोला कि हॉस्पिटल लेके गए? PW1 बोले हैं, PW2 भी बोले हैं, और PW3 बोले कि हम थाना में गए. PW3 फर्स्ट बयान कहाँ हुआ? थाना हॉस्पिटल में बोलते हैं. आईयू भी बोला होगा हॉस्पिटल में जाके बयान दिया. हाँ, सुबह में 4 बजे, सॉरी सुबह में 21 तारीख को गए हैं, और वहाँ पे जाके जो है रिकॉर्ड किए हैं. टीप का निशान नहीं होता, जैसा एक प्रोसीजर है वो सारा कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल में किए. तो FIR जो इंस्टीट्यूट हुआ है वो तो फर्स्ट बयान के बेसिस पे हुआ जी है ना, जी. तो इसीलिए थाने में जाने का तो कहानी कुछ कहीं से कुछ बन ही नहीं रहा. क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा. आईयू एग्जामिन हुआ, एक आदमी बोला है कि एक आदमी के बोलने पे कॉन्ट्रडिक्शंस को तो रिजॉल्व करना होता है ना. जी बिल्कुल. तो रिजॉल्व करने से तो जब तो डॉक्यूमेंट है सीधा वन सीधा और तो बोल ही रहे कि हम हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल लेके आओ, इसीलिए वो कॉन्ट्रडिक्शन का कितना बने? नहीं, अब तो जैसे मतलब कि 1 to 1 करेंगे तो फिर हुजूर के पास सामने में आ जाएगा, फिर जो एविडेंस तो हुजूर. देखिए, प्राइमरीली हम लोग को देखना है कि इन्फॉर्मेंट जो विक्टिम है जी इन अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर या ग्रीवियस इंजरी, राइट,
If the Attempt to victim murder has Just support, one moment. attempt to 307 murder में तो जो है, conviction ही नहीं हुआ आपका। acquittal कर दिए वो। हाँ 307 का क्योंकि उतना डेंजरस नहीं होगा। तो अब तो वो है ही इंजरी नहीं। या जो भी है ठीक है। अब तो है ही नहीं। 325 तो ग्रीवियस इंजरी है ना। जी जी। ग्रीवियस आता इंजरी के नॉट ऊपर ऑन वाइटल पार्ट। नहीं, जो लैसेशन वाउंड है, उनको जो चोट है, वो उनका इस जगह लेफ्ट साइड ऑफ द आई है। ठीक। तो वाइटल पार्ट तो है। तो 307 में कन्विक्शन हो जाना चाहिए था। नहीं 307 तो एक्विटल कर दिए। कोई बात नहीं 325 का ग्रीवियस इंजरी आपको 7 इयर्स। हाँ 325 में भी तो ग्रीवियस इंजरी होना चाहिए ना। जी जी जी। ग्रीवियस इंजरी प्रूव हुआ है इतना वो बताइए प्रूव हो बस। गया। उसमें भी जो देखा जाएगा कि जो एविडेंस आ रहा है, तो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है। जो पीडब्ल्यू1 कहते हैं कि आई और थाई में जो है जांघ में चोट लगा है इनको, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो जो पीडब्ल्यू डॉक्टर है, पीडब्ल्यू5 एग्जामिन हुए हैं, उनको देख लिया जाए। इंजरी ग्रीवियस बोले हैं कि क्या बोले? हाँ ग्रीवियस इन नेचर बोले, लेकिन डॉक्टर जो है वो जो है कॉम्पिटेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो है पीएचसी से आए। और जो कल हम लोग इस जजमेंट इसको पढ़ रहे थे पीडब्ल्यू9 को, तो हम 14 दिन बता रहे थे, मैडम देखी थे 19 दिन था, 1999 का है, तो 19 दिन ये सदर अस्पताल दुमका में रहे, खुद इन्फॉर्मेंट अपने एविडेंस में कर रहे हैं, और वहां से एक भी डॉक्टर नहीं एग्जामिन हुए। एक डॉक्टर का नाम आया भी है जो कि पीडब्ल्यू5 जो कह रहे हैं अपने एविडेंस में कि वो जो है इनका सारा कुछ किए हैं, वो एग्जामिन ही नहीं हुए। और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो डॉक्यूमेंट था फर्स्ट इंस्टांस में, जिसमें कि वहां पे 7 से 8 घंटा रहे हैं, उसी को एग्जिबिट करके इंजरी का नेचर बता रहे हैं, जो कि नेचर बताने वाले डॉक्टर थे वो एग्जामिन नहीं हुए। नेचर बताने वाले डॉक्टर कौन थे? कोई और थे? हाँ जो एक्सपर्ट है पढ़ते हैं लोग, पीडब्ल्यू5 को पढ़ लेते हैं। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है कि नहीं? नहीं फ्रैक्चर का बात नहीं है, आई मतलब इस पार्ट में चोट लगा। फ्रैक्चर तो कहीं हो सकता है ना, फ्रैक्चर तो कहीं भी हो सकता है। छुरा से चोट लगा। हाँ छुरा का एलिगेशन है, छुरा और रॉड से मारने का एलिगेशन है। पीडब्ल्यू5 एक सेकंड, थोड़ा आज हमको 10-15 मिनट जल्दी उठना है, जी तो हम आप जितना अभी सबमिशन किए हैं, हाँ हाँ एक सेकंड, जितना ये सबमिशन किए हैं उतना हम अभी दिखा देते हैं। कल आप एविडेंस पढ़िएगा उतना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाकी आउटलाइन तो आप बता दिए हैं मोटा मोटी अपने। इसमें भी बस थोड़ा सा है ही, हम इसलिए छेपे ही जा रहे हैं। कोई बात ठीक। क्योंकि अब अगर जो प्रीवियस नहीं आएगा तो हमको बेनिफिट है, अगर आ जाता है तो We'll see that. जैसा ऑर्डर है उसी तरह रहेगा। ग्रीवियस इंजरी डिफाइंड है उसी अनुसार। हाँ तो 320 में जो डिफाइन है वो मेरे सपोर्ट में आ रहा है। विल सी दैट, आप भी देखिए ग्रीवियस बनता है कि नहीं बनता। 1 और 3 जो इंजरी नंबर है वो ग्रीवियस इन नेचर है अकॉर्डिंग टू द पीडब्ल्यू5। नहीं ग्रीवियस अकॉर्डिंग टू 320 है कि नहीं, हाँ अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू5 नहीं है। आपको बताना है कि 320 के अनुसार ग्रीवियस है कि नहीं, है ना, तो वो आपको देखना है। अब डॉक्टर किसी इंजरी को ग्रीवियस बोले दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको देखना है कि 320 के अनुसार वो ग्रीवियस, इसीलिए बार बार हम पूछ रहे हैं फ्रैक्चर है कि नहीं, तो फ्रैक्चर होने से ग्रीवियस हो जाता है क्लियर कट, राइट? इसमें तो फ्रैक्चर लिखा फ्रैक्चर है, ठीक है, लिखिए। Heard the learned counsel for the parties, the learned counsel for the appellant has submitted that the alleged incident is dated 29/2002 at 7 p.m. The appellants have been convicted on 30/5/2005, and on that day, the appellant number 1, namely Abhinash Rai, was 35 years of age, and appellant number 2, namely Ganesh Singh, was 40 years of age, and accordingly, they are 55 years and 61 years respectively, as on today. He submits that the case was registered under section 341, 323, 324, 307, read with section 34 of IPC. But the charge was framed under section 307/34,
and the appellants have been convicted for offence under section 325/34 IPC and sentenced for rigorous imprisonment for 2 years and fine of ₹500 each. He submits that the appellants have been acquitted for offence under section 307 IPC. The learned counsel has also submitted that altogether 9 witnesses were examined, and during the course of hearing he would be referring to the evidence of PW 1, 2, 3, 5, 7 and 9. He submits that PW 6 is wife of PW 4 and PW 6 had turned hostile, and so far as PW 4 is concerned, though he has supported the prosecution case but is a hearsay witness. He has further submitted that PW 8 is also hearsay witness. He submits that on account of the aforesaid, he does not want to rely upon to refer to the evidence of PW 4, 6 and 8. The learned counsel further submits that there is no eyewitness to the occurrence, and however the informant of the case is the victim himself, who has been examined as PW 9, and the investigating officer of the case has been examined as PW 7. The learned counsel has submitted that the evidence of PW 1 and PW 9 are contradictory with respect to place of occurrence. He submits that PW 1 has stated that when he reached the place of occurrence, there was nobody around, and other PWs have stated that they had also reached the place of occurrence. He submits that such contradiction reveals that the place of occurrence has not been properly proved. He has further submitted that PW 1 and 2 have stated that victim was taken to the hospital. However, PW 3 has contradicted this statement and has deposed that victim was first taken to the police station. However, during the course of hearing, it transpired that the verbatim of the victim informant was recorded in the hospital. And IO has also been examined in the present case. The learned counsel further submits that PW 5 is the only doctor who has been examined and who has stated that the injury was grievous. He submits that the records would reveal that the victim was taken to Sadar Hospital, Dumka, after Primary Health Center and Sarayahat, and he claims to have remained in the hospital for 19 days. He submits that PW 5, the doctor at the Primary Health Center, could not have immediately given the report with respect to grievous injury. The learned counsel has further submitted that whether the nature of injury was grievous or simple has to be examined in the light of section 320 of Indian Penal Code, and the opinion of the doctor who stated that the injury was grievous is not conclusive. The learned counsel has submitted that upon true appreciation of evidences placed on record, it would appear that the injury was simple in nature, and therefore the conviction for offence under section 325 IPC, read with section 34, is not substantiated, and consequently the conviction and also the corresponding sentence is required to be modified. Yahi aapka? As the court time is over, post this case for further hearing tomorrow. Aap kaun hai? Informant? Are you ready? You have heard his submissions.